Good morning all of you. Today's topic is acceleration. We have studied about velocity and speed in our previous videos. To explain motion in a more precise form, we need to understand about acceleration. Starting with an example, consider you are in a car and the car is at rest. You start the car and the car acquires a speed of 25 meter per second in a certain time, that is 5 seconds suppose. What will you experience? You will experience a sudden jerk in the forward direction. Why? Because the velocity of car changes from 0 meter per second to 25 meter per second in 5 seconds. It means the car is accelerated. Earlier, the velocity of car was 0 meter per second. Now its velocity is 25 meter per second. The time taken is 5 seconds. So what is acceleration? Acceleration is defined as rate of change in velocity. Rate means per unit time. कितने टाइम में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वैसे पर यूनिट टाइम में ही हम कंसीडर करते हैं. तो वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 25. U and V are the symbols to denote the velocity. Initial velocity is denoted by U, final velocity is denoted by V. So acceleration can be termed as change in velocity upon time taken. So its formula will become V minus U upon T. Here the V is 25, U is 0 and T is 5 seconds. So what will be the acceleration of that car which started? It will be 25 minus 0 upon 5. Because 25 is final velocity and 0 is initial velocity. So 25 minus 0 upon 5 will give you 25 upon 5, that is 5 meter per second square. Your car accelerated with an acceleration of 5 meter per second square. इसका मतलब क्या है? एक सेकेंड में आपकी कार की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हुई है, फिर अगले एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, तभी आपकी कार ने 5 सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन कर ली है. सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में, लाइक फॉर एग्जांपल इन 1 सेकेंड और इन 1 आवर आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है. तो वेलोसिटी की यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकेंड होती है. तो एक्सेलरेशन की यूनिट्स कितनी होंगी, कैसी होंगी? ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड. मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड विल गिव यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज ऑल्सो नोन एज मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. ऑल्सो अगर स्मॉलर एक्सेलरेशन बतानी है या लार्जर एक्सेलरेशन बतानी है, यू कैन डिनोट इट बाय सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. Now we have studied that acceleration means change in velocity. Change can be either positive also or negative also. Velocity can keep on increasing with time also and it can keep on decreasing with time. If velocity keeps on increasing with time, then it is positive acceleration, and when velocity decreases with time, it is known as negative acceleration, or you can say retardation. For example, when you apply brake, your object comes to rest. जिस भी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा हो वो अल्टीमेटली रेस्ट पर आ जाएगा अगर आप ब्रेक अप्लाई कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल, जब ट्रेन स्टेशन पे पहुंच रही होती है, देन ट्रेन ब्रेक अप्लाई करती है तो वो स्लोली स्टेशन तक आते आते वो रुक जाती है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है ट्रेन की. अब और एग्जाम्पल से स्टडी करें अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को, हाउ विल वी फाइंड द एक्सेलरेशन? इफ एन ऑब्जेक्ट इज moving, if an object is at rest, means उसकी initial velocity 0 meter per second है, and then the object attains a velocity of 10 meter per second in 5 seconds. What would be its acceleration? It will be final velocity minus initial velocity upon the time taken. That will be 10 minus 0 upon 5. इसको calculate करेंगे, we will get 2 meter per second square the acceleration of that object. 2 meter per second square acceleration itself explains that the object is changing its velocity at a rate of 2 meter per second. हर सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है. पहले 2 है, फिर 4 हो जाएगी, फिर 8, फिर एट लास्ट 5 सेकेंड्स में 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी.
means the acceleration is 2 meter per second square, the rate of change in velocity. वहीं अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को स्टडी करें, it means velocity keeps on decreasing. Object is actually moving at a speed of 10 meter per second, but when it applies brake, the object comes to rest and the velocity is now 0 meter per second. Final velocity में से initial velocity minus करके and divide by time, we will get the acceleration. So it will be 0 minus 10 upon 5 in this case. It will be minus 10 upon 5. That will give you minus 2 meter per second square. Negative sign itself indicates that acceleration is negative, means velocity is decreasing with time. अब वो कैसे डिक्रीज हो रही है? 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से ही वो डिक्रीज हो रही है. पहले 10 है, फिर 8, फिर 6, फिर 4 एंड लास्ट में वो 2 एंड देन 0 मीटर पर सेकेंड रेस्ट पे आ गया ऑब्जेक्ट. ये उसका रेट ऑफ डिक्रीजिंग है और रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन. अब इफ योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने स्टडी किया है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, देन योर एक्सेलरेशन इज 0. योर motion is not accelerated motion. It will not be considered as accelerated motion when there is no change in velocity. Acceleration is 0. And if the velocity will change, then only acceleration will take place. I hope I am clear with this concept of acceleration. Thank you for watching this video.